Hello everyone, I'm your law guider and I hope you're all fine. Our subject is Muslim personal law and our today's topic is dower and its kinds. Starting from what is dower, so let me tell you कि dower एक sum of money या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी होती है जो कि वाइफ को दी जाती है हस्बैंड की तरफ से। क्योंकि मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है तो इसकी कंसिडरेशन लाजमी होगी। वो कंसिडरेशन जो होगी उसको हम डावर कहेंगे। पाकिस्तान में इससे रिलेटेड लॉ है सेक्शन 10 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। Doing interpretation of term dower, we need to see the dictionary of Islam, जिसमें लिखा है कि dower as an obligation impose होती है husband पे as a mark of respect for wife. As we are dealing with Muslim family laws, so you have to quote a reference from Quran, and here the reference says, "Give the woman their dower as a free gift." As far as the importance of dower is concerned, you need to know that, and you have to remember that husband is bound to pay dower in order to contract a marriage, and it is the protection of wife from the arbitrary power of husband to announce divorce. आगे competency to contract for dower. Those conditions are same as required to contract for marriage. Moving towards the main body of question, that is kinds of dower. So let me tell you that it has two kinds, as to amount and as to time of payment. इसको एक्सप्लेन करने से पहले ये बता दूं कि डवर दो तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, इन राइटिंग या ओरल। मोस्टली इट इज इन राइटिंग। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट काइंड ऑफ डवर, दैट इज स्पेसिफाइड डवर, मतलब वो डवर जिसकी अमाउंट एट द टाइम ऑफ मैरिज तय कर दी जाए। इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं, प्रॉम्प्ट और डिफर्ड। प्रॉम्प्ट डवर पेबल होता है एट द टाइम ऑफ मैरिज, ईदर बिफोर कंज्यूमेशन और आफ्टर द कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, और डिफर्ड डवर पेबल होता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। फिर आता है प्रॉपर डवर। ये डवर होता है लेकिन इसमें कंडीशन ये होती है कि अगर डवर डिटरमिन करते वक्त वाइफ की क्वालिफिकेशन या कोई पर्सनल स्किल्स देखी जाए तो वो प्रॉपर डवर होगा। Moreover, there are several ways to determine the proper dower, and that are local custom of society, personal skill of wife, qualification of wife, as I've told you before, social position of husband, and the social status of father or wife. अब अगर husband fail हो जाए तो paid dower, then wife के पास कौन कौन सी remedies हो सकती हैं? तो let me tell you that if the husband fails, so the wife has a right to sue him in the court for the payment of dower. और वाइफ किस किस को sue कर सकती है? Obviously husband को, और अगर husband की death हो जाए तो husband के legal heirs को. At last there is remission of dower, यानी कि अगर वाइफ dower remit करना चाहे husband या उसके legal heirs को तो वो कर सकती है, लेकिन सिर्फ एक condition पर कि वो जो remission कर रही है वो free consent की बेस पे कर रही हो। आई होप आपको अच्छी तरह टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक और एनी टॉपिक इन पर्सनल लॉ, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।